Rana, who is the today's speaker for this session. Sir, just I would like to share my screen for your brief introduction, sir. ठीक है sir. So, Dr. J.C. Rana, he is the National Project Coordinator in UN Environment JEF project at Office of the Alliance of Biodiversity International and CIAT, New Delhi. ये तो खत्म हो गया अब. ये खत्म हो गया अब जो. Sir joined ICR in 1990 and then he served as OIC, ICR NBPGR Regional Station Simla. Then he also served as head division of germplasm evaluation at ICR NBPGR headquarters for 2 years. Then his area of research includes plant genetic resources management. He has worked on several crops of temperate region, specifically several like fruit crops, then millet, potential crops, then rice, wheat, etc. His great interest in on-farm conservation helped farmers to repatriate the material, then conserve the material in the in-situ condition. Then he has also worked for climate change, specifically under NICRA project. He also headed NICRA project as a PI for some time. Then he has developed several varieties and genetic stocks, which is registered with the PGRC at NBPGR. So to his credit, there are several awards and honors. To name just, I will mention few awards here. So, Saris means ICR Ms. MS Swaminathan Award he has received for outstanding research on in agriculture. Sir is also a NAS fellow, I have not mentioned here. Then Sir has received Dr. R.B. Ekbote Prize for outstanding research in plant breeding. Then IIFS Bharat Jyoti Award, Best Citizen Award. So several awards to his credit, which are mentioned here. I will not speak all the award here. Then Sir is fellow of several prestigious society, scientific society like Indian Society of Genetics and Plant Breeding, Indian Society of Plant Genetic Resources, Society for Advancement of Human and Nature, then Simla Mature Garden and Environment Society. So sir, we welcome you here for delivering your talk in this training program, sir. So kindly, I'm stopping my slide here, sir, so you can present your. Okay. Thank you, Jyoti. So I think around 42 have joined. So good morning, friends. As stated by Jyoti that all of you are mainly from State Agricultural University and partly from ICR. And I hope that you all are well familiar with the agrobiodiversity. सारे हिंदी समझते हैं, सब अंग्रेजी वाले ही हैं? नहीं सर, समझते हैं. Different languages also. Mix है. Mixed है. Hybrid रखना पड़ेगा. Good. So I'll share some of my experiences that we have here in through this JEF project while going for mainstreaming of agrobiodiversity. In fact, it is a big challenge nowadays to work on agrobiodiversity because at this juncture the science is moving in two parallel lines like railway lines. On one hand, we are talking about genomics, genome editing, and very high-end science. And the other side, when looking at the climate problems, environment degradation, loss of biodiversity, we are talking about the nature plus or natural farming, where we look for mainstreaming of agrobiodiversity. That is the measure. So that conflict has to be resolved, and how to marry these two parallel lines is a big challenge. And we have tried to do something on through the JEF project that where we are mainstream some of the native crops and varieties, and I'll show you that how we have done it and what was our approach. It's something different approach that we used, which we don't use normally in our national system, both in ICR and SCUs. So I'll share my screen. कितना 1 घंटे का टाइम है मुझे? हाँ सर, हाँ सर. अच्छा. पता नहीं कौन सी वाली है. आ गई? हाँ सर, आ रही है सर. फुल स्क्रीन करिए सर.
ठीक है, पूरी आ गई? अभी नहीं आई। नहीं आई सर। सर 2 बार क्लिक कीजिए, हम्म, कंटिन्यू 2 बार नीचे। ये आ रहा है कि यूर स्क्रीन शेयरिंग, इसमें तो आ रहा है कुछ। स्लाइड मोड नहीं आ रहा सर। अच्छा, वापस कहाँ चली गई? या तो उधर से स्लाइड मोड में खोल के फिर सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, अभी ठीक है सर। है, नॉट आ गई सर। सर। अब ठीक है सर। ठीक है, पूरी आ रही है। जी जी। हाँ स्लाइड मोड में आ गई सर। ओके ओके, तो चलो ये तो बता दिया. In fact, what I'll discuss is that how this agrobiodiversity, when you try to mainstream, and then how we can think of ensuring nutrition, livelihoods, ecosystem service, and how we can reduce the climate vulnerability. This is an approach that, and I'll show you that how we have done successfully through this. Probably in the last 20 days, you must have seen this kind of slide several times, that what is agriculture biodiversity really. So I will not explain, but it occurs at various levels: genetic, species, ecosystem, several facets of agrobiodiversity are there. And it's a big, I mean, fish, it includes animals, microbes, plants, many things. So it's a combination of many living organisms. And agrobiodiversity, this contributes to your most of sustainable development goals, particularly your resilient livelihoods, healthy diets and nutrition. When we talk of this healthy diet and nutrition, तो हम लोग काफी बोलते हैं कि पुरानी चीजों में बड़ी अच्छी थी, बहुत सारी diversity थी. There were a lot of leafy vegetables, a lot of minor fruits, a lot of millets were there in our diet. Probably we have lost them from our diet, and that's why this malnutrition problem is there. Similar, the sustainable land use and this agriculture production system, the more the diversity we have in the production system, it is more sustainable, and lesser the diversity in the production system, lesser will be this more prone to different environmental degradation. Then climate change adaptation. Then I'll show you that how we mitigate the climate, this threats through agrobiodiversity. Then when you go for larger number of diversity in the field, then you're conserving them also. So that's why this sustainable development goal, few of the sustainable goals can be met through agricultural biodiversity, but it is under threat. You must have seen those slides that how it is under threat. The entire production system, there's a lot of shift is there, very few varieties and few genes are there in the system. And most of the knowledge that was associated with agriculture biodiversity is displaced, and probably the modern generation of the farmers is not much aware about the traditional knowledge of what agrobiodiversity we have in the system. And also the more of this increasing climate calamities, I would say that this land use pattern is changing, a lot of land degradation is there, climate uncertainties are there. You must have witnessed even this year also, there's a, if you look at the temperature, even now, 20th February is there. And if in next 15, 20 days, if it rises, it's again a big problem for wheat and mustard. Last year also, we have a big loss, around 5-6 million ton loss was there reported. Similarly, a lot of value chains are under pressure due to this, lot of reasons. I will explain next. And also the kind of planetary boundaries that we have. We need by 2030 to achieve this, or 2050, these goals. So the slide, the BB, this picture, if you see, we needed that kind of balance between all this food production system or food distribution or environmental goals or greenhouse gas emission, all this we need that kind of. But the figure A shows that we are projecting this in some of the like water pollution, ancestral water withdrawals, biodiversity loss, grand commission. So I'm not very much optimistic that by 2050 we will be able to withdraw all these trajectories to the inside this small circle. But still, we need to really try. Otherwise, if these projections will go continue, then there will be a much problem to humanity by and large. And mainstreaming for whom? Because
if you try to mainstream agrobiodiversity, or if you try to go for a larger farmer in Punjab, Haryana, and all this, it's very difficult. But still, the mainstreaming for the 86% of the marginal and small farmers who really hold that diversity. अभी आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल मिलेट शेयर कई लोगों के वो उसमें आ रहे हैं सोशल मीडिया में कि एक छोटे छोटे फार्मर्स उन्होंने कई 50-60 वैरायटीज कई जो प्रिजर्व करके रख के बैठे हुए हैं. दे आर वेरी फैसिनेटिंग अबाउट देम. कोई लार्ज फार्मर नहीं मिलेगा आपको. यू गो एनीवेयर, आई हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट थ्रू द वर्ल्ड. आई हैव नॉट सीन मेनी large farmers that they are so much interested in maintaining that kind of diversity and that kind of land races in their field. But certainly the smallholder farmers are still maintaining tribal areas. And if we mainstream and if we link the diversity or those land races or varieties to their livelihoods, if they earn some kind of income from that, probably that is a good advantage for us. And that is how we can showcase our scientific attitude to them. So now I'll come straight away to my this little background that how we did it. For example, if we are running a project, I will speak about this. One of the project is Jeff funded project to be implemented for around 7 years. And the approach is that we assume that a project is ready. When you write a project, then you must identify right partners. Project partners, very important. Project sites where to have which crop you're going to work. So if we assume that this is we already have done, there is a, approach to identify also that how you identify the right partners, but that it depends that how you negotiate with them. And project sites, what are the project sites, that also will need to be identified very carefully. And community on which you are really trying to work. Community means here I mean number of the crops that you are choosing for work. In this project, we had around 20 different crops on which we worked. And the steps that were involved in that, first is the baseline survey, and this it took almost 1 year for us to complete that baseline survey. हम लोग क्या करते हैं कि जब हम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं कोई भी, तो हम बहुत सारा बेसलाइन सर्वे नहीं करते हैं और मिस कर जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जो इम्पैक्ट है हमारा वो नहीं आ पाता है. इसलिए whenever you start any project, then you must have a baseline survey, very exhaustive baseline survey, and we use that around 300 different questions and 15 or 16 different areas of agrobiodiversity which we undertook that baseline survey, and it was purely using a software that we used. And then the second is that once you have the baseline survey, you assess the diversity, that how to enhance them. The idea is that how you can enhance the varietal diversity of the crop diversity at farm. So there are two ways again, that you collect it or you repeat it from the gene banks. So once you have this in the field, then question comes that from where you get the seed, because all of these native crops and varieties, particularly the tendencies or farmer varieties, they are not in the seed chain anywhere. So you have to ensure that how we make it, ensure that farmers get seeds, the variety that you have tested and they're performing well at farmers field, how to ensure that seeds. And secondly, that once your project, for example, if my project is over in this July, that how to ensure the post-project sustainability. In NBPGR also, we did some project through NEIP and this on the similar lines. But जब हम project के बाद गए वहाँ पे almost 2 years, 3 years before, and they were dismantled almost. तो उन्होंने सबको साइड में रख दिया था. वो कहते हैं प्रोजेक्ट है नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे हम करेंगे. पंचायत वर अनेबल टू डू दैट. सो दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप प्रोजेक्ट की सपोर्ट कर रहे हैं तब तक ठीक है, बट प्रोजेक्ट की सपोर्ट हट गई तो क्या करोगे. तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सोचना है. दैट आई विल डिस्कस दैट हमने क्या सोचा. एंड देन योर कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस ऑफ फार्मर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपके स्टेक होल्डर हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, उनको अगर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग नहीं देंगे, some of the your organizer like Kuldeep is there, they know that how many trainings we organized in this particular project, and how we trained the staff to formulate the trials, and how we trained the farmers to conduct those trials. So that is very important. So these are the various steps that you need to take. And first step that I showed you, that this is the baseline survey. We use the 2 questionnaires, that one is 24 we call dietary survey for nutrition, and one is the ROMIS, this is rural household multiple indicator survey. This is developed by international organization ILRI, and now it's used by many organizations. And you can collect the data through this tablets and then upload, and a very fantastic papers are coming out of it. Some 3 or 4 very
paper, very high impact factor, have been written by our team at international level. And the idea of this baseline survey is that how we can improve our understanding of the current condition, because the project, these kind of projects are community oriented. They are not typically laboratory oriented. It's a mix of that, but it's more of a community approach, that how we ensure communities' livelihoods and nutrition. Not really a very high-end science is not involved in this kind of projects. But you really need a lot of, lot of efforts are required to convince people to find out the ways and means that how you compete with the improved varieties or hybrids. And then on that baseline survey that guide you that how, what project interventions are required, because we have around many sites, around 17 sites, and these sites had different interventions. They were not same for all. The crops were different, their level of understanding were different. In some cases, we started from scratch, and in some cases, it was the platform was there, and we started at a very advanced level. And the idea of this baseline survey is that you can have I'll talk about the plants here. I'm not talking about animal, fish, and all, only plant, where you can see the PGR, what we call. So we have this assessment to seed system, crop diversity, target crops, then livelihood, and all these 4 or 5 parameters were there, and they were assessed through baseline survey. Then जब आप ये कर लेते हैं, then you can have a very good reports, उससे आपको आएंगी. You can generate a different kind of correlations, and that give you an idea that what really the situation is in the ground level. So this kind of results come. So once you have the baseline survey completed, you know everything. Then second step is coming, that you go to field and then identify and find the champion farmer. We call it the champion farmers. Every farmer will not be champion. For example, अगर आप किसी साइट पे 50 फार्मर के साथ काम कर रहे हैं, तो आपके उसमें से 5-6 फार्मर्स होंगे, वो चैंपियन फार्मर होंगे. चैंपियन फार्मर का क्या मतलब होता है कि एक तो वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, दोज वर रियली विलिंग टू वर्क इन द प्रोजेक्ट. तो वो डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे उस साइट पे, वो लीड करेंगे फार्मर ग्रुप को. कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है तो वो फार्मर्स करेंगे, फिर कुछ मदर ट्रायल कंडक्ट करने हैं तो वो उनके फील्ड पे करेंगे, क्योंकि वो विलिंग है, वो आपको लैंड भी स्पेयर कर देंगे, और वो एक्टिव रहेंगे डे टू डे उसमें जो आपके प्रोजेक्ट अफेयर है. होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जब आप साइंटिफिक एक प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, तो हम लोग ना, हमारे नेशनल सिस्टम में है, हम लोग साथ यही दिक्कत थी कि नेशनल सिस्टम में हम लोग एनजीओ को नहीं इन्वॉल्व कर पाते हैं, ग्रास रूट लेवल पे फार्मर्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर पाते हैं, और हम फिर जा नहीं पाते. अब हम बने अगर आसाम में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अब दिल्ली से हम कितना जाएंगे, साल में 1 बार 2 बार चले जाएंगे, तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि साइंटिस्ट को कोई काम होते हैं. तो हमें एक टीम हमने इसमें बनाई थी, एक टेक्निकल बैकस्टॉपिंग हम जो लोकल केवी के हैं और आईसी उससे ले रहे थे, या जो एससीयू है, आईसीआर का इंस्टीट्यूट है, और ग्रास रूट लेवल पे जो हमारा एनजीओ था वो काम कर रहे थे, क्योंकि एनजीओ की जो एक्सेस है टू फार्मर्स और ग्रास रूट लेवल वर्क वो ज्यादा होती है बजाय के हमारे, वो उनकी बात ज्यादा मानते हैं. सो दे वर एबल टू कन्विंस, और उनका जो डे टू डे उनको साइंस नहीं हम करवाते हैं, उनको हम टेक्निकल बैकस्टॉपिंग देते हैं. देन जब आपने ये वैरायटी आइडेंटिफाई कर ली, कलेक्शन देख ली कि वहाँ है क्या, एग्जिस्ट कितना कर रहा है, क्योंकि कुछ एक वैरायटीज जब आप फार्मर से बात करते हैं, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं एक मूंछ वाली बाजरी करके, जब हम बात कर रहे थे राजस्थान में, तो वहाँ लोगों ने बोला कि क्या सर हमें ये मिलेगी राजस्थान में, मूंछ वाली बाजरी होती थी हमारी. हमें कहा क्यों चाहिए भैया तुम्हें, तो वो कहते हैं कि इसमें क्या है, इसमें रिसल्ट होते हैं इसके एयर में, तो इसको बर्ड्स नहीं खाते हैं. तो आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, लेबर है नहीं, तो वो कहते हैं कि हम हाइब्रिड लगा भी देते हैं तो हम पैरा नहीं कर पाते हैं, और वो सारे खा जाते हैं बर्ड्स. तो वो अगर हम 10 क्विंटल भी देती है तो हमारे 2 क्विंटल हार्वेस्ट नहीं कर पाते. लेकिन ये जो है एक आध हफ्ता इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, फिर ये रिजल्ट हार्ड हो जाते हैं, तो बर्ड्स इसको बैठते ही नहीं है, उनकी आंखों में लगता है ये. तो इस तरह का उनको चाहिए था. सो वी ट्राई टू रिस्टोर इट. हमने जीन बैंक में देखा, फिर वहां लोगों से कलेक्ट किया, सो इसको फिर हमने मेन स्ट्रीम में लाए, इसके ट्रायल वगैरह करके. तो इस तरह से आपको कुछ रिपीटेड करनी पड़ेगी. फिर आपको सीड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, जो आइडेंटिफाइड हो गया जो क्राउड सोर्सिंग ट्रायल को जाना है, मैं बताऊंगा आपको क्राउड सोर्सिंग ट्रायल क्या होते हैं. देन आपको अपना जीन बैंक माइन करने पड़ेंगे, कि जैसे आपको राजस्थान में ट्रायल है तो राजस्थान से क्या कलेक्शन आई है. हमने कम से कम ज्यादा नहीं तो 3-3.5 हजार जो सेशंस थे वो जीन बैंक से माइन करके वापस ले गए, और वापस वहां पे उनको इवेल्युएट किया. एंड देन प्रोजेक्ट पार्टनर्स की एज आई सेड के ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, चैंपियन फार्मर्स की, क्योंकि डिजाइन करने पड़ेंगे ना ट्रायल. आपको मैं बताऊंगा ट्रायल डिफरेंट होते हैं, कोई एफएलडी टाइप नहीं है कि आप ले गए 20 वैरायटी लगाए वहां लगा दिया और उनको बुलाया कि देख लो कितना अच्छा चल रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ डिफरेंट टोल्ड विद अ डिफरेंट अप्रोच. देन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस फार्मर्स की जो मैं बताया वो करनी पड़ेगी. कुछ ऐसा लिटरेचर आपको डेवलप करना पड़ेगा जो फार्मर फ्रेंडली हो.
जैसे आगे मैं बताऊंगा किस तरह का लिटरेचर आपको करना पड़ेगा। अब आपने ये कर लिया, सीड मल्टीप्लाई कर लिया, वैरायटी आइडेंटिफाई हो गई। फिर आपको ये कि क्राउड सोर्सिंग ट्रायल बोलते हैं, इनको ट्राइकूट अप्रोच है जो हमारे बायोस्टी ने डेवलप की है, एंड इट्स बीइंग यूज्ड नाउ globally, particularly in Africa and Pacific region, and in Asia also we used in the Seed for Need program and also this JAF project, and now again we are using for in some Maharashtra, Gujarat and some of the projects. So once you have that seed, so इसमें हम क्या करते हैं कि डिजाइन करेंगे, आपके ये ट्रायल डिजाइन करेंगे। क्या होते हैं ये देखो, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सोर्स जो फार्मर को हमने क्राउड सोर्सिंग ट्रायल के लिए दे दिया, ये ऐसे काम करती है। मान लिया अब आपकी 10 वैरायटीज हमने ली, तो इसमें जब इसमें डेटा डालते हैं तो ये आपको एक डिजाइन कर देगा 3-3 वैरायटीज का, ABC करके। इसमें जो वैरायटीज है उसका नाम नहीं बताएंगे। मान लिया किसी वैरायटी का नाम 1 है, 2 है, 3, ये तो 10 है, लेकिन फार्मर्स को जाएगा ये ABC करके। ब्लाइंड ट्रायल होता है ये। फार्मर्स जो आपको जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें आप 10 वैरायटी की इंफॉर्मेशन डाल दोगे, तो आपको 50 फार्मर में देना है, तो 50 फार्मर के ये 50 आपको कॉम्बिनेशन में 3-3 का कॉम्बिनेशन 50 वो बना देगा। तो उसमें आप 3-3 के वो फार्मर्स को दे दीजिए। और उसमें क्या है, आपको बहुत ज्यादा, हम इसमें फार्मर को बड़ा स्ट्रेस नहीं करते हैं, बहुत टैक्स नहीं करते हैं कि उसको बहुत ज्यादा लैंड चाहिए, नहीं, छोटा मे बी 4x4 मीटर, 3x4 मीटर, वट एवर इज अवेलेबल, उतने की लैंड में वो लगाता है। और उसके साथ फिर वो पार्टिसिपेटरी टाइप जो सिलेक्शंस हैं वो अपने आप देखता है उसको कैसी लगी। पर ईच फार्मर जो है वो रैंडम कॉम्बिनेशन 3 वैरायटीज का उसको मिल जाएगा। तो इस तरह क्या करते हैं हम लोग कि आपको हर साल ये साइकिल, आपको 4-5 साल साइकिल चलाएंगे। मान लिया एक बार आपने 10 वैरायटीज ले ली, अब फार्मर ने क्या किया, आपने 10 फार्मर को 50 फार्मर को दे दिया। उसके मदर एंड बेबी मदर ट्रायल क्या होता है कि जो 10 वैरायटीज आपने लगाई हैं, तो जो चैंपियन फार्मर है उसके आप 10 की 10 वैरायटी को लगाओगे। जो बेबी ट्रायल्स हैं वो जो बाकी फार्मर है आपके 50 में से 5 फार्मर के आप मदर ट्रायल लगा दोगे या 4 के, बाकियों को आप 3-3 दोगे, 3-3 का कॉम्बिनेशन में। जब 3 कॉम्बिनेशन देंगे तो वो अपना उसमें सिलेक्ट करेंगे। हो सकता है 10 में से एक पर्टिकुलर साइकिल में आपकी 2 वैरायटीज ऐसी आ गई जो सबको अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा ठीक है ये हमें अच्छा, ये अच्छी लग रही है। फिर क्या करेंगे आप, 2 वैरायटी आपकी इसमें से, जैसे ये देख रहे हैं ना कि ये इसमें से 3 वैरायटी से 1 वैरायटी निकल के आ गई, तो ये इस तरह फिर नेक्स्ट ईयर फिर चलेगा वही साइकिल, दूसरी 10 आ जाएगी, फिर 1 निकल के आ जाएगी। फिर इस तरह से साइकिल 4-5 साल चलेगा, तो आपके 5 साल में मान लिया आपने 50-60 वैरायटी वहां पे टेस्ट कर ली जो नेटिव वैरायटी थी। तो उसमें से आपके पास क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द डे यहाँ 1 आध वैरायटी थी, 8 से 10 वैरायटीज आपके उसमें सर्कल में आ गई। अब इनका फिर वही आपको कल्टीवेशन, स्टोरेज, तो सारा उसका करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास 5 साल में, 4-5 साल में हर फार्मर के पास उसकी चॉइस की, कई बार अर्ली मैच्योरिंग, कईयों का टेस्ट अच्छा है, किसी का कुछ है, इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, कोई रेजिस्टेंस है, कोई टॉलरेंट है बायोटिकली, तो वो अपने हिसाब से करेक्टर नोट करते हैं वो। तो आपके पास क्या है कि एक किटी ऑफ वैरायटी बन गई। दिस इज जनरल क्राउड सोर्सिंग अप्रोच कि आप कैसे उसको बढ़ाते हैं, साइकिल जो फिल्टर होती चलती हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास काफी अच्छी वैरायटीज आ जाती हैं। तो ये पूरी एक अप्रोच है। मैं इतनी तो आपको आधे घंटे में नहीं समझा पाऊंगा कि नीड यूज ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपको एक हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए कम से कम इसको पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो एक सॉफ्टवेयर है, इसको जो हमने हमारे ये कुलदीप वगैरह अभी जो हमारी जेफ की टीम थी ये ट्रेंड है इसमें, एंड दे हैव डिजाइन्ड सर्टेन ट्रायल्स इन द जेफ प्रोजेक्ट फॉर देयर क्रॉप्स। तो ये क्लीन बॉब सॉफ्टवेयर है, ये अवेलेबल है, रेडली अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री है। और तो इसमें ये ट्रायल डिजाइन हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं हम, ये जो बुकलेट है, जो फार्मर्स की बुकलेट है, इसमें वो है, वो एक पिक्टोरियल है। इसमें क्या होता है कि फार्मर्स को कोई डेटा नहीं लेना होता है, वो टिक करेगा उसको कौन सी वैरायटी अच्छी लगी, कौन सी नहीं लगी। तो इसको पिक्टोरियल बना देता था कि वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो जो हमने फार्मर्स को बांटी तो उन्होंने बड़े खुश हुए, वो कह रहे अच्छा है, इसमें हम वो करेंगे, टिक करेंगे करेंगे। तो उन्होंने वो बड़े खुश होकर संभाल के रखा इनको। तो उनको मजा आता था, अच्छा लगता था उनको कि हम डेटा ले रहे हैं, इसमें टिक कर रहे हैं। कई बार फार्मर के जो लड़के थे, यूथ लेडीज बड़ी खुश होती थी कि उनको अच्छा लगता था। तो दैट काइंड ऑफ एक पिक्टोरियल टाइप उनको देते हैं। इसमें बहुत सारा डेटा कलेक्शन नहीं होता है। वो मदर ट्रायल जो डेटा आपका जो साइंटिफिक डेटा है, वो इंस्टीट्यूशन जो हमारे साथ इन्वॉल्व है, वो उसमें डेटा उनके ऑलरेडी होता है या दे वो कनेक्ट कर लेते हैं दैट। बट फार्मर से वी डोंट एक्सपेक्ट दैट काइंड डेटा, ओनली दे विल सिलेक्ट के इनको अर्ली मैच्योरिंग लगी, या इसकी यील्ड अच्छी आई, या इसका टेस्ट अच्छा लगा, या थोड़ी रेजिस्टेंस थी जो कि बाकियों के मुकाबले। सो दोज आर द फ्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स जिसके बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह की एक डेटा शीट जनरेट हो जाती है, जो मैं आपको बता रहा था ना, जो ए वैरायटी, बी वैरायटी, सी वैरायटी। अब ये इनके नाम है। तो फार्मर को ABC जाएगा, लेकिन हमें पता है कि ए में क्या है, इस फार्मर के पास क्या है, फार्मर 1 2 3 4 11 इसके पास क्या है।
सो इस तरह से 3 कॉम्बिनेशन में चले जाते हैं। तो दैट इज हाउ डेटा शीट इज जनरेटेड। फिर आपकी रिपोर्ट्स भी जनरेट हो जाएंगी इससे कि क्या करेक्टर जो कॉम्बिनेशन जर्मिनेशन है, तो इसमें आ गया आपका इसकी जो कौन सी ने किया था इसमें, जैसे तेलिया उर्द है ये हो, तो इसमें उसका पैरामीटर का आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी। तो इससे क्या हुआ, अब एक हमने फार्मर्स को एक किटी ऑफ वैरायटीज एट द एंड ऑफ द डे उनको दे दी। बट आपको उनको फिर ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि 50 वैरायटीज अगर आपने टेस्ट की तो आपकी जो सिस्टम है, प्रोडक्शन सिस्टम में जो आई, वो आपकी 8 से 10 वैरायटीज आ गई, 50 नहीं आएगी, बट वी टेस्टेड बिकॉज इतना नहीं। सो आपको जहाँ एक चॉइस नहीं थी, फार्मर के पास यही कि 2 वैरायटीज थी, उसके पास एक अच्छी चॉइस हो जाती है 8 से 10 वैरायटीज जो भी उसने किया। लेकिन एट द सेम टाइम उनको आपको ट्रेन करना है सीड प्रोडक्शन के लिए भी, कैसे उसके आपको, क्योंकि नेटिव जो क्रॉप जो नेटिव लैंड बेसिस है उसमें बड़ा हिट्रोजेनस मिक्सचर होता है, तो उसको थोड़ा बहुत उसको प्योरीफाई करके सिंगल प्लांट सिलेक्शन करो या प्योर लाइन सिलेक्शन करो, तो उसको ताकि आपका कल को जो वैल्यू चेन में जाएंगे तो मिक्सचर में नहीं जाएंगे, तो वो भी आपको फार्मर्स को ट्रेन करना है। सो वी आल्सो डिड दिस, फार्मर्स को हमने ट्रेन किया। फायदा क्या होता है इसके, जो आपके क्राउड सोर्सिंग पार्टिसिपेटिव अप्रोच है, इट्स आपने देखा कि एफएलडी से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या, एक तो आपको ऑन फार्म टेस्टिंग होती है, आपका कोई एक्सपेरिमेंटल फार्म में कोई टेस्टिंग होती, फार्मर फील्ड में होगी सारी, और इट एंगेज फार्म एंड एम्पावर फार्मर्स, स्पेशली जो वीमेन दे सिलेक्ट वैरायटीज, उनको अच्छा लगता है कि हम लोग खुद सिलेक्ट कर रहे हैं, हम डेटा ले रहे हैं, उनको हम बताते नहीं है, वो अपने आप काम करते हैं। जो चैंपियन फार्मर्स के साथ मिलकर के वो आपको डेटा भेजेगा, फिर जब उनके पास जाएंगे फर्स्ट क्लास आपको चाय भी पिलाएंगे, आपका वो करेंगे, कुछ कुछ आपको दे भी देंगे, गुड़ दिखा देंगे, कई कुछ करते हैं ना। So at the end of the day, each crop cycle, farmers select few varieties of their own choice, and which is suitable to their environment, traits, agronomic, abiotic, biotic, whatever is quality, taste. Particularly, this quality and taste are very important for low native varieties, and farmers look for that taste. So at this step, ये जो थर्ड स्टेप हमने पूरा कर लिया, इसमें क्या हुआ, फार्मर के पास एक वाइडर चॉइस मिल गई उसको टू मीट हिज और हर डाइवर्स रिक्वायरमेंट राइजिंग टू क्लाइमेट वेरिएबल, एक हमने इंश्योर कर दिया। अब एटलीस्ट उसके पास क्या है, जो अगर क्लाइमेट थ्रेट कोई आता है तो उसके पास एक किटी वन वैरायटी की उसके पास अवेलेबल है, एंड ही कैन हार्नेस समथिंग फ्रॉम द दीज वैरायटीज व्हेन दे आर ग्रोइंग। अगर उसका एक या दो ही होती है और कोई ऐसा कोई क्लाइमेट थ्रेट आता है तो ही माइट लूज एवरीथिंग। सो दिस इज हाउ वी इंश्योर दैट क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इज रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट। अब अगर सेकंड प्रोसेस क्या आती है, अब हमें इंश्योर करना है कि इसका सीड कैसे लेना है। सीड भी आपको चाहिए, लोकल लेवल पे चाहिए, तो जो हमारा चैंपियन फार्मर्स है या जो ग्रुप होता है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है चाहे पीओ, तो वहां पे वी क्रिएटेड ए कम्युनिटी सीड बैंक्स। तो इस तरह से कम्युनिटी सीड बैंक्स है, पूरा एक इसका किट आता है, एंड वी हैव क्रिएटेड अराउंड 30 कम्युनिटी सीड बैंक्स एट डिफरेंट प्रोजेक्ट साइट्स। तो उससे क्या होता है कि जो लोकल सीड सिस्टम है, क्योंकि अभी भी मैं बताऊं आपको, पूरा नॉट इन इंडिया बट ग्लोबली, particularly in this Asia, Pacific and Africa, these developing continents, बहुत सारे फार्मर्स जो है वो इनफॉर्मल सीड सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उनको उस फॉर्मल सीड सिस्टम से नहीं मिलता है। उसका इशू क्या है कि वो स्मॉल होल्डिंग है, अब छोटी छोटी उनकी खेती है, जोत है, उसमें उसको हाइब्रिड कहाँ लगा पाएगा, तो वो लोकल सीड अभी भी इंडिया में भी बहुत है। पर्टिकुलरली अगर आप जाइए इधर मध्य प्रदेश के कुछ छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वहाँ पूरा पूरा इन्फॉर्मल सीड सिस्टम पे, हिल्स पे पूरा इन्फॉर्मल सीड सिस्टम पे काम चलता है अभी भी। सो ये जो नेटिव वैरायटीज है, इनका सीड हमें इंश्योर करना पड़ेगा उनको थ्रू कम्युनिटी सीड बैंक। कम्युनिटी सीड बैंक होता क्या है, अभी तो सही नहीं। तो मेरे ख्याल डॉक्टर मालिक मुनिक ने कोई लेक्चर दिया होगा तो मुझे नहीं पता, बट कम्युनिटी सीड बैंक क्या है, ये लोकल लेवल पे सीड मेंटेन करते हैं। इट्स अ कम्युनिटी लोकल ऑर्गेनाइजेशन हुज कोर फंक्शन इज टू मेंटेन, सेफगार्ड एंड एक्सचेंज लोकल एंड फार्मर प्रेफर्ड सीड्स। इट्स ऑलवेज फार्मर प्रेफर्ड सीड, आप उसको जबरदस्ती थोपेंगे नहीं, अगर फार्मर प्रेफर्ड होगा तभी वो उसको रखेगा। एंड इट्स मैनेज कलेक्टिवली बाय कम्युनिटी, कम्युनिटी मैनेज करती है इसको, कम्युनिटी मैनेज करती है। एंड इट यूजुअली परफॉर्म्स फ्यू फंक्शंस लाइक conserve local varieties and restore varieties that have been lost or disappeared, provide access to good quality seed of the native crops and varieties, and even low cost or easily available। आपको मतलब कोविड के टाइम क्या हुआ कि बहुत सारा ये था, तो हमारे जो कम्युनिटी सीड बैंक्स थे उसमें मेरे ख्याल कम से कम हम तो 150-200 क्विंटल सीड जो था फार्मर्स के डिफरेंट कम्युनिटी सीड बैंक ने वहां से बांटा, बिकॉज मिल नहीं रहा था सीड कहीं भी कोविड टाइम में। एंड इट सर्व ए प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिटी। तो एंड ऑफ दिस स्टेप, इस पे हमने क्या किया कि फार्मर्स को
उसकी वैरायटी डाइवर्सिटी भी बढ़ा दी और उसको सीड भी अवेलेबल करा दिया कम्युनिटी सीड बैंक में, ताकि उसको कोई भी ऐसी थ्रेट अगर आती है तो उनके पास अपना सीड अवेलेबल है, अपने घर में अवेलेबल है, अपनी कम्युनिटी में अवेलेबल है, वो इजिली यूज कर सकते हैं। कितना टाइम है अभी कि खत्म हो गया? अच्छा, अभी तो 25 मिनट है सर अभी टाइम है सर। हाँ नहीं, हाँ वो आ रहा, टाइम आ रहा है इसमें अभी। हाँ हाँ हाँ। आधा घंटा हुआ अभी तो। अब क्या करना है, अब आपने कम्युनिटी सीड बैंक डेवलप कर दिया, सब कुछ कर दिया, मैंने बना भी दिया, पैसे भी दे दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसको भी चलाएगा कौन भाई? मेरा प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया, तो कम्युनिटी तो फिर हाथ झाड़ देगी। इतना मेहनत करी आपने, 5 साल इतनी वैरायटियां टेस्ट करी, सब कुछ किया, तो क्या करना है हमें? उसको मार्केट में ले जाना है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस प्रोजेक्ट में, कि वैल्यू चेन डेवलप हम कैसे करें, ताकि पोस्ट प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी जो है वो इंश्योर करनी पड़ेगी। कम्युनिटी सीड बैंक तो ठीक था, हमने पैसे दिए, सब कुछ किया, लगाया, उनको ठीक लगा, लेकिन अब उसके बाद कौन चलाए? तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक अप्रोच रखी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हमारे एफपीओस थे, अभी क्या है, अब तो एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज वगैरह बन रही हैं, तो हमने उनको आइडेंटिफाई किया। पहले एक ट्रेनिंग मॉड्यूल, पहले एक वैल्यू चेन पे ट्रेनिंग कराई। शायद कुछ लोगों को पता है कि हमने एमबीपीजीआर में ही वैल्यू चेन की ट्रेनिंग कराई थी। उसमें हमने काफी इंटरप्रेन्योरशिप जो बाहर वाले थे उनको भी बुलाया था, और इंटरनेशनल जो ट्रेनर है वो भी बुलाए थे, और अपने पार्टनर भी बुलाए थे, कुछ प्राइवेट इंटरप्रेन्योर भी बुलाए थे, तो उन सबको इसकी जो वैल्यू चेन की ट्रेनिंग दी। एंड देन लोकल लेवल पे हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप और फार्मर प्रोड्यूसर जो ग्रुप है, जो एफपीओस हैं, उनको आइडेंटिफाइड किया, उनको ट्रेनिंग दी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था वो न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी थी। जितनी आपकी नेटिव वैरायटीज थी जो हमने टेस्ट होकर हमारी आई, कम से कम 1000 से ऊपर 1200-1300 की जो राकेश भारद्वाज इनकी लैब में करी है, पूरी न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग हमने करी है मेजर न्यूट्रिएंट्स के लिए, नॉट रियली विद एडवांस न्यूट्रिएंट्स और बायोमोलिक्यूल्स, बट मेजर न्यूट्रिएंट्स के लिए हमने इसकी पूरी न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग करी। देन वी आइडेंटिफाइड सब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कि उनको कैसे हम वो करें, तो उनके हमने आइडेंटिफाई किए। तो जो एनजीओ थे उनको उनके उनको एक कंपनी के टाइप उन्होंने क्रिएट करी, एंड वी हैव अ सेपरेट इंटरफेस मीटिंग, राउंड टेबल डिस्कशन, दैट कैसे प्रमोट करें इनको। तो उनको कन्विंस करना पड़ा। इस वहां पर न्यूट्रिशन प्रोफाइल में बहुत हेल्प करी हमारी, क्योंकि जो प्राइवेट ग्रुप कंपनी है, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है, वो तो देखेगा ना, आप एज ए, इफ यू गो एज ए कंज्यूमर टू एनी शॉपिंग मॉल, तो आप क्या करोगे? आपको पूरी एक ब्रांडिंग चाहिए, लेबलिंग चाहिए, उसके ऊपर कैसे यूज करना है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या, वो सब कुछ चाहिए। तो वो सारा नहीं करेंगे तो कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होता है। बट इफ यू हैव ऑल दिस काइंड ऑफ ब्रांडिंग एंड दिस एफएफएसआई लाइसेंसिंग, सब कुछ अगर आपके है उस प्रोडक्ट में, तो आप ब्रांड उसको बिल्कुल ले लेते हैं, विश्वास होता है कि नहीं, इट्स सर्टिफाइड बाय सम गवर्नमेंट एजेंसी एंड सो दिस इज व्हाट वी डिड इन दिस। एंड आपको शोकेसिंग करनी पड़ेगी। प्राइवेट एंटरप्राइज इतनी जल्दी नहीं आता है आपके उसमें, वो तभी आएगा जब वो सेटिस्फाई होगा, जब उसको लगेगा। तो एक तो हमने क्या किया, जो एनजीओ थे हमारे साथ में इन्वॉल्व है, उन्हीं ने एक एफपीओ जो एफपीसी बना दी, जो क्योंकि एफपीसी अगर आपकी बनती है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, और कंपनी एक्ट में उसको रजिस्टर कराते हैं हम, तो उसमें क्या है, वो मार्केटिंग कर सकते हैं पूरे कंट्री में कहीं भी। तो उन्हीं ने एक बिहाइंड द कर्टन, कोई एनजीओ तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो तो कर नहीं सकता एज सच, बट उन्होंने एक एफपीसी के माध्यम से उन्होंने उसकी मार्केटिंग कर ली। कैसे करी मैं बताऊं। दिस इज द काइंड ऑफ होलिस्टिक वैल्यू चेन। और इस प्रोजेक्ट का एक खासियत है कि ये जो हमारा, ये यहाँ पे नहीं हो पाता था हमारा, ये पांचवा और छठा जो यहाँ नहीं हो पाता, ये हम यहाँ से चलते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड तक, फोर्थ में कोशिश करते थे, लेकिन यहाँ तक हमारे प्रोजेक्ट रुक जाते थे, क्योंकि वैल्यू एडिशन नहीं हो पाती थी। वैल्यू एडिशन कहाँ करी हमने? इसमें न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग वगैरह करी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और सारा जो उसकी लाइसेंसिंग थी वो कर दी इसमें, तो एक वैल्यू एडिशन हो गई, और मार्केटिंग फिर हमें इजिली मिल गई। जब ये मिल गए तो फाइनल यूज भी मिल गया फिर। तो ये जो था, ये दिस वाज ए बिग चैलेंज फॉर अस। यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक हम साइंटिफिक कर लेते थे, जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ा दिए, सारा कर लेते थे, बट दिस वाज ए बिग चैलेंज। तो इसको हमने यहाँ पे जो था ना, आपका एब्सेंट वैल्यू चेन कैसे बनी, ये कमर्शियल ब्रांडिंग, कोलैबोरेशन लोगों के साथ, सारा ये हमने किया इसमें। तो ये हम इसको यहाँ तक लेके आ गए पूरा फाइनल यूज तक। सो नाउ मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इन द मार्केट। सो दिस इज हाउ इंश्योर दैट प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी जो है हमारी वो बनी रहे फील्ड पे। ये इस तरह की जो और बहुत अच्छे जो हमें रिजल्ट्स इसमें आए, काफी अच्छे रिजल्ट्स इसमें मैंने जो आपकी लोगस्मिक एंडेसिस को काफी जो आपको मैं बताऊं, जिसमें जो पर्ल मिनट में
when I was discussing with Tara Satyabati about this rancidity, because rancidity is a big problem in parliament. उसका आटा आप स्टोर नहीं कर सकते, वो खटा हो जाता है, खराब हो जाता है। बट ये जो लैंड डिसीज थी, हमने जो नेटिव वैरायटीज पर्टिकुलरली पीली बाजरी, जगराना बाजरा और ये मूंछ वाली, इनका जो लो रेंसिडिटी लेवल आया बहुत अच्छा। वो शी वाज सरप्राइज्ड कि इतना अच्छा भी रिजल्ट हमें मिल पाएंगे। एंड वो उन्हें काफी उसके एडवांस प्रोफाइलिंग करके अब नाउ दे आर यूजिंग दोज मटेरियल इन द ब्रीडिंग प्रोग्राम आल्सो। सो इस तरह के जो वैल्यू चेन थी, इससे क्या होगा कि आपकी जो टैगलाइन बनेगी ना, आपकी जब ब्रांडिंग करोगे, जो टैगलाइन बनेगी, तो टैगलाइन में आप इसमें लिख सकते हैं जैसे एंटीबायोटिक से डायबिटिक हो जाएगा, कोई किसी के लिए कोई शुगर का, इस तरह से एक जो टैगलाइन भी में यूज कर सकते हैं। तो यू कैन फैसिनेट द फार्मर्स, कंज्यूमर। ये देखो जो बाजरा का बता रहा हूं ना, ये नेटिव वैरायटीज थी बाजरा की, काफी पॉपुलर थी और इनका काफी अच्छा जो लेवल था, लो रेंसिडिटी मिली, which was not available, and they don't have that material. Whole of the parliament की पूरी यूनिट जो थी, उनके पास मटेरियल था ही नहीं। एंड आल्सो जब आप वैल्यू चेन करते हैं तो आपको लॉट ऑफ मीडिया प्रोपेगेंडा भी करना पड़ता है। आपको डिफरेंट मीडिया से, आपको सोशल मीडिया, लोकल प्रिंट मीडिया, उन सबका वो लेना पड़ेगा हर टाइम आपको, ताकि लोगों का अवेयरनेस रहे कि नहीं ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ। अब क्या हुआ, कैसे हमने किया, क्योंकि बेनिफिट शेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग आ जाती है कि फार्मर कोई कंपनी आप लाए हैं तो उसमें जो हमारा नोया प्रोटोकॉल है, जो बायोडसी एक्ट हमारा कहता है एनबीए का, वो तो नहीं कर पाए क्योंकि वो नहीं पॉसिबल है। वो मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है एंड आई एम स्टिल चैलेंजिंग दैट, क्योंकि वो कंपनी जो है, कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है पर्टिकुलरली, एफपीओ तो कर देते हैं वो फार्मर के थे, लेकिन कंपनी जो है वो कहती है कि मैं तो 1 लाख फार्मर के साथ काम करता हूँ। How I can show my turnover to you? How can I share my turnover? The percentage of my turnover? क्योंकि आपके तो मेरे पास 200 फार्मर है खाली, या 400 फार्मर है, तो उसमें क्या किया हमने, क्या ठीक है, we will not go for it, but and फार्मर भी खुश था। फार्मर भी कहता मुझे नहीं चाहिए जी कोई उस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं चाहिए, खाली मेरा तो क्या है, वो बायबैक सिस्टम में ले ले। तो हमने क्या किया, जो फार्मर को, जो हम एक बात करते हैं ना, कई बार आप लोग भी जाओगे तो डोंट ट्राई टू टेक फार्मर्स टू मार्केट। हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, फार्मर को तू मार्केटिंग भी कर, तो ये भी कर, वो भी कर, नहीं कर पाएगा। फार्मर इज वेरी इनोसेंट, उसके पास का नहीं है मार्केट में उतरना और लोग उनके मार्केट प्लेयर से लड़ना उसके लिए। सो फार्मर को आपको एक हैंड होल्डिंग दीजिए, टेक्निकल बैकस्टॉपिंग आप खुद करिए, और जो एंटरप्रेन्योरशिप हैंड होल्डिंग है वो या तो वहां से कोई लोकल यूथ आगे आता है, कोई विमेन ग्रुप आगे आता है, वो करते हैं मार्केटिंग, तो उनको आपको लिंकेज देना है। फार्मर को आपने प्रोडक्शन देना है, वो प्रोड्यूस करे, फार्म गेट लिफ्टिंग हो जाए, और जो प्राइस है उसको, जो शॉर्ट प्राइस है वो मिल जाए। इससे ज्यादा अगर करवाओगे फार्मर से तो वो नहीं कर पाएगा। तो जब बाकी जो काम है आपका, जो फील्ड का काम, जो आपका मार्केटिंग का काम है, जो एंटरप्रेन्योरशिप का है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये सारा जो है वो आपको, जो आपकी एफपीसी या प्राइवेट जो कंपनी है वो करेगी। तो उससे क्या होता है कि उनको भी अच्छा लगता है कि हम ये कर रहे हैं, हमें अच्छा प्राइस मिल रहा है। तो हमने क्या, हमने 2 टाइप का वो किया। एक तो हमने, जैसे जीरा फूल आप गूगल में डालोगे तो हमने इसको जीरा फूल की पूरी वैल्यू चेन डेवलप की है छत्तीसगढ़ में, आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा, अमेजोन में सब जगह मिल जाएगा इसका। तो मैंने प्राइवेट प्लेयर आइडेंटिफाई किया एक, जो ऑलरेडी इस बिजनेस में थे, एमओयू साइन कराया, और उसको वही जो 50% एडवांस पेमेंट के साथ सारा कंपनी ने अपनी ऑन ब्रांडिंग और पैकेजिंग करके ऊपर। दूसरा हमने अप्रोच अपनाई कि जो हमारा लोकल्स अपने जो एनजीओ थे उसी में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करवा दी, उन्हीं की अपनी, जैसे ये जोरहाट में हमारे पास वो एफडीआई के राजीव शर्मा है एक, तो उन्होंने क्या किया कि एक नेटिव बास्केट करके ब्रांड ले लिया, उसको रजिस्टर कर लिया, और रेड रिवर करके कंपनी रजिस्टर करा ली। उसमें क्या एफएसएल लाइसेंसिंग हो गई। अब वो क्या कर रहा है, उसकी अपनी कंपनी है, अपने उनके फार्मर ग्रुप है, उनके साथ काम कर रहे थे, वहीं उनका कम्युनिटी सीड बैंक है। तो जो एग्रीगेशन थी हमारी, जो हमारा कम्युनिटी सीड बैंक था, वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हम लोग ने। एक तो कम्युनिटी सीड बैंक में जहाँ सीड रखा था वो हो गया, दूसरा उसकी एग्रीगेशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, वो सब भी वहीं होता है, वही फार्मर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बड़े खुश होते हैं कि अपना उनका प्रोडक्ट है। रेट जो था उनको, जहां उनका 20 रुपए बिकता था, उसको हमने डबल कर दिया ऑलमोस्ट। कई जगह डबल से ज्यादा अच्छा रेट मिलता है, बिकॉज उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। जब उसको पैकेजिंग में हम दे रहे हैं तो उसका जो डिमांड, लोकल डिमांड है, अभी तक हमारी जो पूरी प्रोजेक्ट साइट्स में जहां जहां भी हमने पूरी वैल्यू चेन की है, कोई भी अभी लोकल डिमांड ही पूरी नहीं हो पा रही है, बिकॉज मार्केट तक तो बड़ी दूर, लोकल जो मार्केट है वहीं तक पूरा डिमांड हो पा रहा है उनका। सो दिस इज द 2 वे अप्रोच। या तो आप प्योरली प्राइवेट कंपनी को ले आइए, उसमें उसको उसमें जोड़ दीजिए, या आपका जो एनजीओ पार्टनर है, जो आपकी एफपीसी है, उसको आप, जैसे मंडी में हमने एफपीसी से कर दिया, जो अपना एनजीओ था उसी ने अपनी एफपीसी क्रिएट कर ली। तो अब हमें चिंता नहीं, अब एटलीस्ट आई एम नॉट वरीड कि इफ यू आर नॉट देयर इन द प्रोजेक्ट,
these sites will be self-sustaining because they are marketing में उतर आए हैं। ये हमारी जो वैल्यू चेन में आपको बताया ना, जैसे नेटिव बास्केट, ये इस तरह से जीरा फूल, तो ये वैल्यू चेन डेवलप की है। ये इनके यूनिक फीचर्स सारे उसमें लिखने पड़ते हैं आपको। इसका इम्पैक्ट देखिए, इसको जीआई भी मिल गया है ना। उसी इसमें जो आप इम्पैक्ट देखेंगे लोकल लेवल पे, हमने इसका थोड़ा सा डेटा इकट्ठा किया था कि इसका जो बिफोर जीआई और आफ्टर जीआई क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो ये छत्तीसगढ़ का डेटा है कि कैसे इसके रेट देखिए आप, सेलिंग प्राइस कहाँ इसका 35 से 50 तक 150 रुपए तक किलो मिल रहा है ये, तो वो बहुत फर्क पड़ जाता है इस पे। ये इसी तरह से और तो इसके जस्ट फ्यू एग्जांपल आई गिव यू कैसे इसका इम्पैक्ट आता है, इसलिए डेटा दिया है थोड़ा सा। ये भी इसका ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में इसका, क्योंकि ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट कल्टीवेट होते हैं मोस्टली नेचुरल एनवायरनमेंट में, दे आर नॉट रिस्पॉन्ड टू वेरी हाई फर्टिलाइजर डोजेस और उसके लिए। ये सारे इसी का है कंपैरेटिव जो वैल्यू चेन थी। इस तरह ये आपके जो जोराट में हमने एक नेटिव बास्केट, इसमें तो इस तरह के ये लिफाफे है, इसका ये है आपका। तो इसमें क्या है, सारा लिखा है इसमें, पूरा इसका वैरायटी का नाम है, और बैक साइड में इसकी, बैक साइड लगाई नहीं है, बैक साइड में इसका पूरा वो न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग है, लाइसेंसिंग और सारा उसका वो लिखा हुआ है। मेरे ख्याल आगे होगा ये, दिस इज द पैकेट। नाउ दिस इज द पैकेट, नेटिव बास्केट इज अ ब्रांड, योर एथनिक टेस्ट, ये टैगलाइन हो गई आपकी। नाउ दिस इज द वैरायटी का नाम, न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक कल्टीवेटेड नेटिव राइस ऑफ असम, ये एक का फ्रंट साइड हो गया। बैक साइड में इसका सारा ये जिसने किया उसका आ गया सारा, ये आपका ये नेट वेट, प्राइस, मैक्सिमम प्राइस सारा आ गया। यहाँ पे पूरी न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग आ गई, और ये जो हमारे प्रोजेक्ट के लोग वगैरह इसमें पूरा लिखा है कि किसने कैसे किया, किस प्रोजेक्ट के अंदर किया, कहाँ किया, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है। अब आप जब इसको, इस पैकेट को हाथ में पकड़ोगे तो आप पूरा पढ़ लोगे, आप किसी को पूछने की जरूरत नहीं है आपको। आप किसी को बुलाओगे ना कि क्या है यार ये, आप देखो यार अच्छा है, गवर्नमेंट के लोगो लगे हैं, सब कुछ है, लाइसेंस FSI का मिला है, न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग भी लिखी है, सब नाम लिखा है। तो ये जो इस तरह की वैल्यू चेन से आप लेके जाओगे, करोगे, तो इससे आपका जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि जो ट्राई टू मैरी बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, जो हाई एंड साइंस और इसमें हमने कोई हाई एंड साइंस नहीं करी। देयर इज नो हाई एंड साइंस में, कोई जीनोम एडिटिंग नहीं करी, कोई जीनोमिक इंजीनियरिंग, ना कोई इतना पैसा लगाया, बट एक अप्रोच हम उस तरह से लेके चले। और अब ये क्या है, अब इसका जो प्राइस है, तो फार्मर उस बड़ी उसको लगा रखे कि उसको इसकी जो रेट मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं। मंडी की साइड में हमें जो रेड राइस था वो 150 रुपए, उसका पैडी भी था, 15 क्विंटल उन्होंने पैडी बेचा 150 रुपए क्विंटल, पैडी 150 रुपए किलो, पैडी नॉट राइस बेसिकली, पैडी। बट एंड देयर इज अ 250 to 300 400 तक जो रेड राइस की डिमांड है। सो दैट काइंड ऑफ वैल्यू चेन आप डेवलप करेंगे, दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। तो आज की डेट में एडवांटेज क्या है कि इसके टेकर हैं, पहले इसके टेकर नहीं थे। जो आपकी वैल्यू चेन है या नेटिव लोकल वैरायटीज हैं, अब आप कहीं भी बड़े बड़े मॉल में जाइए, कहीं जाइए, लोकल चीजें बहुत सारी बिक रही हैं, तो उसके अब आपके पास टेकर हैं और लोगों की इनकम पेइंग कैपेसिटी भी है। तो इन सबको देखते हुए अगर आप इस बैकग्राउंड में को भी आपको मद्देनजर रखना कि टेकर कहाँ है, आपका बायर कौन है, बायर भी चाहिए आपको। फिर आपके जो आपके जो आउटलेट है, आउटलेट कहाँ है, जैसे इसका आउटलेट अब कामाख्या के भी जाओ, कामाख्या देवी टेम्पल में, तो वहाँ इसका आउटलेट है एक नेटिव बास्केट का, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन वो पूरी हो नहीं पाती डिमांड में, कामाख्या में इतने लोग आते हैं कि वो आउटलेट जिस दिन वो लाता है सामान, आउटलेट खोलता है तो 5 दिन में खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। सो जो मैंने आपको कहा था कि until now we try to address 3 issues, that is climate vulnerability को कर दिया with wider choice of varieties and variability, and nutrition profiling कर दी, nutrition आपको अच्छा उसमें मिल रहा है, they are so rich in nutrition। particularly होता क्या है, जैसे अब आई एम नॉट अगेंस्ट द मिलेट्स एंड ऑल दिस, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो आपके स्टेपल फूड है, if you are meeting nutrition, malnutrition is really not due to that we are not taking millets. Malnutrition is primarily due to that we have left leafy vegetables and fruits particularly, and our native staple food crops are not very rich in nutrients. We are talking about the bio-fortified food, bio-fortified varieties की बात करते हैं, लेकिन उनकी एक्सेस देखिए ना, जो आपका 86% मार्जिनल फार्मर है, पुअर फार्मर है, उसकी एक्सेस कहाँ है? या नॉर्मल कंज्यूमर जो है आपका, हमारा जो कितने आप अपने ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, जो वेदर इट इज एनबीपीजी और या नहीं एसएयू, आपके 15-20% लोग हैं जिनकी लाख में सैलरी है, अदरवाइज सारे क्या है, 15-20 हजार, 25 हजार मैक्सिमम 30, उसकी पहुंच कहाँ तक है बायो-फोर्टिफाइड, वो तो डिपो से लेगा ना। So if you are meeting your nutrient through these staple foods, then it's much better because they are easy to digest. They are carbohydrates, उसमें easy digest है। Millets क्या है? Millets का आपको अगर millets का आपको
ब्लेंडेड फॉर्म में लेते हैं तो टू सम एक्सटेंट ओके, बट अगर आप डायरेक्ट मिलेट खा लेते हो, बायोअवेलेबिलिटी नहीं है, आपकी बॉडी का अवेलेबल तो होना चाहिए ना। अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं तो फिक्स हो जाएगा बॉडी में, वो मिनरल्स हैं वो नहीं बचेंगे। सो दोज काइंड ऑफ एनालिसिस हैज टू बी डन। लाइक किनोवा के पीछे लोग भागते हैं, किनोवा में सैपुलिन में कई कुछ है, उसमें हमारे पास एमरैंथ है, बाकी कई प्रकार के वो दूसरे हैं स्मॉल मिलेट्स है उसको। तो इस तरह जो आपकी जो नेटिव वैराइटीज हैं दे आर आल्सो रिच, तो उसके थ्रू अगर खाएं तो न्यूट्रिशन आपकी उससे ठीक होगी। अब दूसरा इनकम एंड लाइवलीहुड आपका ठीक हो गया, भाई आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं उनके उसी चीज के जो नहीं मिल रहे थे, तो थोड़ा बहुत पैसे इनकम भी शुरू हो जाती है आपको। तो 3 आपके एड्रेस हो गए। चौथा इकोसिस्टम सर्विसेज आपकी इसलिए हो गई कि सारी जो आपकी नेटिव वैराइटी है वो आपके लो इनपुट एनवायरनमेंट में ग्रो होती है, तो आपका जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज पेस्टिसाइड का लोड है वो थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा रिस्पॉन्स इनका अच्छा आता है ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में, और डिमांड भी आपकी है सब कुछ, तो उससे ओवरऑल आपकी सॉइल हेल्थ में फर्क पड़ता है। तो इस तरह इनडायरेक्टली जो आपके टेंजिबल नॉन टेंजिबल सारे बेनिफिट जो है इसमें आपको मिल जाते हैं। सो दिस वाज अवर अप्रोच एंड दिस इज हाउ वी डिड इट, फाइनली रीच टू द कंप्लीट वैल्यू चेन फ्रॉम द स्क्रैच लेवल। आइडिया फाइनली क्या होता है हमारा, व्हाट वी वांट टू डिलीवर, बिकॉज आपका मैंने जैसे कहा बायर भी है, उसके पैसे भी हैं, पर उसको खाने को ठीक नहीं मिल रहा है, और हमारा फार्मर भी है जिसके पास जमीन भी है, उगा भी रहा है, लेकिन उसको पैसे अच्छे नहीं मिल रहे हैं। हमारे पास लेबर भी है जिसके पास जमीन, लैंडलेस लेबर भी है जो खेती में काम करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल बैठी हुई है, इस ट्रायंगल को हम एक दूसरे को कैसे सप्लीमेंट करें, कैसे असिस्ट करें, कैसे हम बड़े पैसे वाला का पैसा निकलवाएं, और कैसे फार्मर को थोड़ा मजबूत करें। और फार्मर बोल दो जो आपके लैंडलेस लेबर है, लैंडलेस लोग हैं, वो खेती में काम मोस्टली तो खेती में काम करते हैं, तो खेती में वहाँ काम करेंगे, तो तीनों को थोड़ा एक अच्छा एक जो कॉम्बिनेशन जो अच्छी एक अप्रोच बन जाती है। एंड दिस इज व्हाट आवर आइडिया वाज दैट इफ यू सेल योर प्रोडक्ट इन द बिग मॉल, बिग शॉपिंग मॉल, इन द दिस बिग आउटलेट्स, तो अच्छा उसको मिल जाता है, अच्छा प्राइस मिलेगा तो फार्मर भी खुश रहेगा, जो आपका बायर है, जो मैं अगर पैसे खर्च रहा हूँ तो मेरे को अच्छा चीज मिल रही है, मैं भी खुश हूँ, मेरे को उसमें न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, और जो आपका लेबर है उसको भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज हाउ वी डिड इट, बट देयर आर चैलेंजेस भी हैं, इट्स नॉट ए, मैं जैसे आपको 7 साल लगे हमें इसमें पूरा करने में, एंड स्टिल इन सम केसेस अभी भी हमें उसका जो पोस्ट प्रोजेक्ट वॉच है वो रखनी पड़ेगी, उसको कैसे करेंगे। सो इट्स अ कम्प्लेक्स, सो देयर का सिस्टम अप्रोच एक लेके चलना पड़ेगा, एक सिंगल माइंड सिंगल अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, बट यू हैव ए मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। सेकेंडली जैसे मैंने कहा आपको कि देयर इज अ क्लियर टेंशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि प्रोडक्शन की तरफ भी है, सस्टेनेबिलिटी भी है, सस्टेनेबिलिटी तरफ जाते हैं तो प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आता है, तो कैसे हाउ वी मैरी बोथ टुगेदर। सो वी इन सम पॉकेट्स लाइक इंडो गैंगेटिक प्लेन, रियली देयर वी हैव टू प्रिजर्व देम फॉर प्रोडक्शन, उसके लिए करना पड़ेगा क्योंकि कंट्री का फीड रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, बट सर्टेनली वी हैव सम पॉकेट्स इन द mountains or in the tribal areas or in the smaller fort where we can use this kind of native varieties and this kind of areas to really work on this value chain, and so that the balance will be there. And क्रॉस सेक्टरल थोड़ी डिफिकल्टी होती है। क्रॉस सेक्टरल क्या है कि उसमें अब ये देखिए आप क्लाइमेट चेंज आपका एमओएफ वाले डील करते हैं, एग्रीकल्चर या फार्मर प्रोडक्शन की बात करती है, न्यूट्रिशन की बात नहीं करते, वो कोई हेल्थ वाले करते हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं करते, वो कोई दूसरी मिनिस्ट्री है, वाटर की दूसरी है, सोशल की दूसरी है। सो इस सब का इनको एक कैसे इनको बीच में जोड़ जाड़ के सबको इकट्ठा लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो देयर आर चैलेंजेस, बट दोस कैन बी मैनेज्ड इफ यू हैव ए ओवरऑल सिस्टम अप्रोच। सो आई थिंक खत्म हो गया। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। ज्योति, हाँ, यस सर, यस सर। हाँ, मेरी तरफ से तो हो गया भैया, जितना हाँ, ठीक है, ठीक बोलना है। था मैंने, 45 मिनट हो गए, मैं अनशेयर कर दूं इसको। आंसर कर दीजिए सर। हाँ सर। So, dear participants, so now जी, you जी, are जी। the session is open for discussion. You can ask if you have some doubt or queries. So, हो रही sir, अनशेयर नहीं हुई अभी? क्या सर आंसर हो गया सर? हो गया, चलिए ठीक। So, very nicely, means sir has shown the how we can go for entrepreneurship using our plant genetic resources and biodiversity, how it can be mainstreamed for the livelihood security and nutritional security of the farmers and mankind across the globe and in India particularly. So if anyone have some specific queries, so they can ask right now, or they can put in the chat box, or even sir can respond later on also through mail or
phone number. We'll be sharing to all. बता दिए तुम लोगों ने 20 दिन में लग रहा है। सर ये तो बहुत अच्छा चल रहा है एनजीओ के साथ जो है ना, मीन्स हाँ नहीं, काफी सक्सेसफुल जो है, नहीं दिस इज सक्सेस स्टोरीज। काफी सक्सेसफुल जो है चल रहा है ना, मतलब और सारे नहीं है, 10-12 क्रॉप्स पे है, 10-12 क्रॉप्स पे है ना? 20 में है पूरा, पर हमने काफी कुछ और सारी साइट्स में है। ओके ओके, तो ये मतलब लोकल and- एंटरप्रेन्योरशिप जो थी ना, उन्होंने उनको ले लिया, जो हमारे यूथ थे ना पर्टिकुलरली, हाँ 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 और हाँ, कुछ प्राइवेट थे, तो वो फायदा रहा काफी। ओके ओके ओके, करके झाबुआ में ट्राइबल एरिया थे ना, जहाँ हाँ हाँ झाबुआ हाँ, में, छत्तीसगढ़ में, मंडी में, सब जगह एनजीओ के थे ना, इनका अपना वो नहीं था, ये वैसे ही करते थोड़ा बड़ा काम, तो इनको हमने कहा भैया तुम्हें कब तक पैसे देते रहेंगे, तो इन सब ने फिर अपना एक ब्रांड सबने लॉन्च कर दिया, 12 ब्रांड लॉन्च किए हमने डिफरेंट। ओके ओके, जैसे मारवाड़ी बास्केट राजस्थान में, नेटिव बास्केट उधर, माउंटेन ग्रेन उधर, तो ये सारे अलग इन्होंने अलग हैं। रजिस्टर करवाया होगा, ये मीन्स सारे ब्रांड रजिस्टर करवा के एफएसए लाइसेंस लेकर के, सारा लाइसेंस जो लेके जो लोगो वगैरह और ब्रांड का। तो मार्केटिंग का चैनल सर मिल गया फिर, मतलब कहाँ पे वो? अरे मार्केट पूरी नहीं हो रही है कहीं से, मार्केट अब कंपनी एक्ट में जा रहे हैं, कंपनी एक्ट में कर लिया ना इन्होंने, हाँ तो अब उनको उनका अपना बिजनेस है, तो वो फार्मर ग्रुप उनके साथ जोड़ दिए हैं, तो वो अपने आप करवाते हैं, पैसे देते हैं उनको, प्रोडक्शन करा रहे हैं, और कम्युनिटी सीड बैंक मेंटेन कर रहे हैं साथ में वो कम्युनिटी। ओके 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 ओके, yeah, so anybody has some specific query please? Okay, so इसमें कोई ज्यादा साइंस नहीं था, इसलिए तो हाँ नहीं वो तो है साइंस, ये तो साइंटिस्ट है हैं। लेकिन मेन तो सर ये है ना, अल्टीमेटली जो है मीन्स वो प्रोडक्ट लाना है, और फिर प्रोडक्ट को कैसे कंजम्पशन एंड टू एंड पहुंचाना है ना सर, फार्मर टू कंज्यूमर्स जो है, नहीं, नेचुरल पर्पस तो वही है। तो अल्टीमेटली तो हम जो भी कर रहे हैं तो हमारा पर्पस तो यही है ना जो है, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, और उसके लिए जो मीन्स ये हाँ, बेस्ट बातें कुछ कर आपने जो बताया, इवन आफ्टर रिटायरमेंट पीपल कैन थिंक ऑफ, इवन इन सर्विस अगर हमें चाहिए कि ठीक हम ब्रेक लेके मैं दूसरा काम कर रहे हैं मीन्स ज्यादा अच्छा, तो फिर you can transfer also to this kind of thing. Okay. So if not, then I would like to thank today's speaker, Dr. J.C. Rana, Country Director, SIA. And sir, we are very thankful to you for accepting our invitation to deliver your talk. So I would like to thank you on my behalf and on behalf of organizing team and whole NBPGR to accept our invitation and deliver such a wonderful and excellent talk. So Miss, our participant certainly might have enjoyed this topic, and they could have got the better idea about entrepreneurship, how we can work for the enhancing the livelihood and nutritional security of the farmers. You can work on the grassroots level for the farmers. So thank you very much, sir. Thank you everyone. So I'm leaving. Okay, sir. Okay, thank you, sir. So, dear participants, so be online, okay, or even if you're you be online, you don't leave the meeting. So we have, we'll start sharply at 11 o'clock, but we'll don't leave the meeting. Okay, so we'll be starting our valedictory program, which will be chaired by Dr. T.R. Sharma, DDG Crop Science. So, so everyone need to be joined in the meeting.
और आगे हो जा, और आगे चलो दादा लेके इधर आ जाओ ना, सामने आ जाओ माता जी।
Senior of you and my dear trainees. A very pleasant morning to all of you. First of all, I request our Honorable Director to welcome our Chief Guest, Dr. P.R. Sharma. Thanks, sir. Now may I request Dr. R.K. Gautam, Head Division of Japan's Evaluation, for formal welcome address. Thank you, Dr. Kuldeep. Namaskar, good morning. Today it is an auspicious day and we are very lucky to have the gracious presence of the most respected and our Chief Guest, Dr. P.R. Sharma, Deputy Director General Crop Science, ICAR Headquarters, New Delhi. Sir, on behalf of the entire NBPGR family, we warmly welcome you and we all feel really inspired and elated by your gracious presence.
in your own campus of ICR and BPGR. We are highly grateful to you, sir, for sparing your valuable time from your busy schedule. We are also blessed with the able guidance, support, and dynamic leadership of our Dr. GPC, our director, and BPGR. So we also welcome you in today's program. I also warmly welcome all the heads, OICs, senior colleagues, HRD nodal officer, chief administrative officer, senior grade controller, SFO, all members of the organizing team members, resource persons, and importantly, all the trainees who have joined this program online. So today we have kept the valedictory session to conclude our 21 days virtual training program on the management and utilization of non-genetic resources. We firmly believe that your gracious presence and wisdom words will inspire and benefit our trainees. Now it's my pleasant duty to introduce our chief guest to all the trainees and audience. Dr. T.R. Sharma is Deputy Director General Crop Science, ICR, New Delhi. He has been former Executive Director, National Agri-Food Biotechnology Institute, Mohali, Punjab, and Chief Executive Officer, Center of Innovative and Applied Bioprocessing, Mohali, Punjab, and Project Director, ICR National Institute of Plant Biotechnology, New Delhi, and Director, ICR Indian Institute of Agricultural Biotechnology, Ranchi. Dr. Sharma obtained PhD from SP Agricultural University, Kolhapur in 1990. For his PhD degree, he obtained the Dr. P.S. Krishna Fellowship from Bharat, Mumbai. He completed his first postdoctorate from University of Alberta, Canada, and worked on molecular biology of plants and plant pathogens. Subsequently, he acquired two more postdoctorate trainings on rice genome sequence finishing and genome analysis from the Cold Spring Harbor Laboratory, US. Dr. T.S. Sharma has contributed significantly to the improvement of rice for over 16 years. His outstanding contributions include mapping, cloning, and functional validation of the rice blast resistant gene PIKH from a novel source, which activates complex defense mechanism as demonstrated by microarray analysis. He has also mined a few allele PIRH, new allele PIRH from wild rice for resistance to blast pathogen. Dr. Sharma has also developed robust DNA markers tightly linked to PIKH, which are being useful extensively in Indian agri. Dr. Sharma has characterized genetic variability in different plant pathogens like Alternaria brassicola, rapani, collected from geographically diverse regions of the world using molecular markers. Most significantly, he has been associated with the genome sequencing of rice, tomato, and pigeon pea genomes. He has also developed new protocols for in vitro multiplication of disease-free seedlings, mycorrhizomes, and synthetic seeds of ginger. He has authored more than 95 research papers and mentored about 20 PhD, MSc, and postdoctorate students. Dr. Sharma received University Gold Medal and Certificate of Honor in PhD, a Young Scientist Award from NAS 1998, ICR Young Scientist Award in Crop Sciences 1999, Professor M.J. Narasimha Academic Merit Award, Professor Umakant Sinha Memorial Award in Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Indian Science Congress Association, International World Technology Award for Biotechnology, the World Technology Network EPT National Bioscience Award for Career Development in 2007. He also received NAS Recognition Award in 2008, and he also obtained was awarded with Rafi Ahmad Kidwai Award of ICR, which is very prestigious award of our ICR. There is probably no scientific academies of which Dr. Sharma is not a fellow. In recognition of his outstanding efforts and contributions in science, he has been conferred with fellowship of INSA, Indian National Science Academy. He is also fellow of Academy of Sciences, fellow of National Academy of Sciences, fellow of National Academy of Agricultural Sciences. He is having the most prestigious GST post National Fellowship
also. So with these words, I request all the audience and request all the trainees to unmute them and give a big round of applause to our chief guest. Sir, with this humble introduction, I once again welcome you to the premises of ICR NVPGR. I also our esteemed director, Dr. G.K. Singh Sahab. I also welcome one and all present on this auspicious occasion. Thank you very much. Thank you, sir. And I would like to request Dr. Jyoti Kumari, training coordinator, for presenting brief overview of 21 days training program on management and utilization of plant energy resources. Thank you, Dr. Kubri. Honorable DDG Crop Science, respected director, NVPGR, HODs, OICs, and distinguished members present in the hall. So I'll be briefing about the training conducted, sir. So we welcome you all, sir, first of all. So the training, 21 days training management and utilization of plant genetic resources was jointly organized by the ICR, NVPGR, New Delhi, and HRN Unit ICR, sir. The training was organized under the leadership of Dr. Gyanani Pratap Singh, Director at BPGR, Dr. R.K. Roth, Head Division of Plant Evaluation, Dr. K.S. Huda, HRD Nodal Officer, and other team members are there. Under this training program, we have the support from Dr. Ankur Tomar, Sivangi Mathur, Vijay Sarma, etc. for the technical support. Then this training program was inaugurated by DDG Crop Science, DDG Education, and ADG Seeds on 1st February, sir. And this training program said we have received more than 100 applications, 120 applications, and considering the June slots, we have selected 84 participants belonging to 19 states and different designations, different institutes. Regarding institutes, SAUs represent 59 participants, 9 from ICR, 2 from CG institutes, 6 from private institutes. Among the states, Madhya Pradesh and Odisha had the major representations, 12 each from both the states. We had good representation gender-wise also. So among total 33 were female candidates, and among designations, 65 were assistant professor, 12 were associate professor or senior scientist, and 5 were professor or head ranks. Now, among these are some glimpses of the participant screenshots. And next. So among the resource persons, so we have kept the resource persons from international and in-house speakers and external speakers. Among international, 7 were there belonging to SIMMIT, ICARDA, Kansas State Agriculture University, BSAD, and World Health Center, so covering all the aspects of PGR management. Then we have also covered here several like nanotechnology, artificial intelligence, high throughput phenotyping, etc. So not just I will give some glimpses of the resource person. Dr. S.D. Poitner from ICRIS had covered the core and mini core collection. Dr. A.K. Joshi for conservation, exchange, and use of huge genetic resources in global context. Then we had lectures on the novel topics, transitive conservation of plant genetic resources by Dr. Anuradha Agarwal. Then we had about biosecurity by Dr. S.C. Dubey. Then PGR informatics was done by Dr. Sunil Achal. We had from World Health Center, Dr. Martin Khan about the plant genetic resources of vegetable genetic resources utilization. Then we had lectures by Dr. N.S. West about the pre-breeding and genetic enhancement of cereal crops. Dr. R.K. Singh about the salinity in the rice. Then Dr. Dinesh Agarwal, very important topic about the PPBR Act and other registration protocols. Then digitalization in considering high throughput phenotyping, digitalization of PCR data is very important. So we had one lecture about the field app and how to use, and then we had considering this International Year of Millet, we kept the lectures for millets. Dr. Tara Satyavati delivered the lecture. Then from Dr. Shiv Kumar Agarwal from ICARDA, he delivered the lecture about genetic gain in pulses, how to boost and how to use the new technology of speed breeding, high throughput phenotyping and genomics, etc. So then we had lectures by Dr. Jagdish Rane for the affordable high throughput phenotyping. Then we had intersection, very good interactive session with Dr. Raj Esparada, Sir Padmusan, Dr. Raj Esparada. It was very good and appreciated by all the participants. It was demanded by all the participants. That's why we kept on 15th February, sir. Then considering the importance of in the climate change, this high throughput phenotyping for Arctic states is very much important, sir. So we
put important lectures on this aspect. Dr. P.V. Prasad from Kansas State University, Dr. Viswanathan about phenomics facility, Dr. Uttam Kumar for high throughput phenotyping for large scale evaluation trial. Then we had Ravi Sahu for drone and remote sensing, he talked about, sir. Then, sir, after the concluding all the lectures, we took the evaluation of participants to see the knowledge gain and enhancement. So through Google form, we took the pre-training also. So we took one questionnaire we put, and then post session, and then we compared, sir. So these are the glimpses of some responses and report. Here we could find, sir, there is a knowledge gain and enhancement among the participants, and we found that 49% knowledge gain was there after the training conducted, sir. So thank you very much, sir. So these were all about the training. Thank you, madam. As we know, this training has been organized on very unique area of agriculture science, that is plant genetic resources. Certainly, all participants have experienced and learned new things. So with the permission of chair, I would like to request our trainees for feedback, if they are willing to give any kind of feedback or motivation, if any. Just 2-3 will take. I request participants or trainees to raise hand one by one. With the permission of chair, so we would like 2-3. Thank you. Okay. Dr. Amit Gautam. Yeah, please unmute yourself. Okay, thank you, sir. The training was very fruitful for us. It was a full bundle of theories as well as applied agriculture science. The seasons cover all the fields of agriculture, from plant breeding to pathology, physiology, molecular biology, horticulture, and many more, including practical session also. All the lectures and practicals are very organized, assembled, and well explained. The lecture of Dr. Pratibha Madam, who guided us about the law and policies issue to manage plant genetic resource, was awesome. Dr. H.D. Upadhyay from ICRISAT taught us about the core and mini core collection and utilization of PGR. Dr. G.P. Thenwal and Dr. Pawan practicals on GIS tools in PGR management was eye-opening and gave us an idea and steps involved in the GIS tools in PG management. Dr. D.K. Agrawal lecture on PPB-FRA was very fruitful. He explained us about the registration and the value of PPB-FRA for registration of the varieties. That was awesome. The lecture of Dr. G.P. Misra and Dr. Mukesh Rana on gene mapping, QTLs and DNA fingerprintings in crop was very informative. Dr. Gautam informed us about the principle and techniques of PGI characterization was very, very good. And we learned many things from him. The lecture of Dr. A.K. Joshi from CIMIT was very interesting and very useful about wheat genotype. Similarly, Dr. A.K. Gupta and Dr. M.C. Yadav and Veena Madam gave very informative lectures. And Dr. Girish Jha gave us the detailed information on a static method that was very. Dr. Amit, if there is any suggestion, please. Otherwise, we are running short of time. Okay, sir. Okay, thank you. I would like to thank director and organizer. And the suggestion was in future, if offline training can be organized, then that would be good for interaction between trainees as well as the scientists presenting and organizer also. This would be my suggestion. Okay. Thank you for the suggestion. Please be very quick and brief in your suggestions and feedback. Dr. Suma Mowgli, Principal Scientist. Hello, please. Honorable Dr. Sharma sir, Director and the PGR, and all the esteemed program coordinators and conveners. The lecture series were very thoughtfully structured and very well executed. Although it was virtual, we never felt the gap. It was very effective. And we had some, although we have registered some NBPGR talks in the past when there was an offline Okay. Dr. Vilas from MPKV. Please unmute yourself.
Very good morning to one and all. So, as far as our MPKV is concerned, we have established one gene bank. Even though it is a small unit, but whatever the technical guidance and the information given by this training is very nice one. So it will give some courage to state agriculture universities to come forward for these important issues regarding the conservation of the germplasm. But it's my quite request to kindly allow us for at least 10 days offline training, or you may say the training regarding the conservation and all these facilities, even though these advanced technologies are not available at SAUs, but whatever the knowledge we will get, so it was very important. And it's again a kind request, please allow us for at least 10 days for offline training. Thank you very much. Thank you, Dr. Vilas. Dr. Payasi, Dr. D.K. Payasi from JNKVV Sagar campus. Thank you very much, sir, for giving me opportunity, Honorable DDG, sir. As I am fortunate to have 3,500 accessions of linseed germplasm under AICRP as well as DBT sponsored network project on linseed, funded by Department of Biotechnology, coordinated by NBPGR itself. During the session, we have learned evaluation management of genetic resources in field, as well as gene bank conservation strategies, characterization, foresight maintenance, mini core development, and all other activities, trait validation, DNA fingerprinting, plant quarantine, theoretical and practical aspect of different burning issues, and IR spectrophotometry and rapid screening and pre-breeding and biohybridization. Among them, I was much more interested in wide hybridization, and because I am working on it, for future, we would like to request you to organize a hands-on training program during Kharif season, so we can also participate and update our breeding knowledge through learning by doing. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Payasi. If there is any other participants, please. If not, so we will continue, and we will take, if any suggestions are there, you can contact us through mail ID, whatever has been given to during our organizing contact details. Now, I would like to request our Honorable Director, Dr. GP sir, for his remarks. Because it most respected Professor T.R. Sharma Sahab, respected Deputy Director General from Sciences, Head of the Divisions, and senior faculty members of NBPGR, all the participants of the training program sponsored by the Education Division of the Indian Council of Agricultural Research. As you are aware that PGR has become more and more important for feeding the ever-growing population of India and elsewhere in the world. And of late, a lot of things have been talked about the plant genetic resources. And when we submitted a proposal of having a career motion scheme training program through Education Division, and we are very grateful to the Education Division and the Honorable DDG, Dr. C. Agarwal, for approving our training program. Sir, this training program was initially thought of having offline mode only, but unfortunately, seeing the large number of participants who have applied, we have a thorough discussions whether we should go for online or offline mode. And we thought that it would be better if large number of faculty members across ICR and SAU gets benefit out of this. I'm very grateful that the training program was devised in such a way, the lectures were really thought of, and I'm very thankful that some of my suggestions of including AI, artificial intelligence, and bioinformatics for the management of PGR system has been included. Of course, you are authority in the field of bioinformatics, but large number of softwares, apps, and
different kinds of programs have been devised by Dr. Sunil Achak, and these are being very regularly used now. And being DDG of the crop science division, I think you are very much aware of the activities of National Bureau of Plant Genetic Resources. We are here for modifications of all, improvement of all. And we are also looking into the suggestions given by you for changing the guidelines, etc., of registration of germplasm genetic resources. One round of discussions already over, and I think it very shortly be coming out with the revised guidelines of genetic resource registration. I'm indeed very thankful. I would take much time because most of the things have been narrated by your fellow colleagues. It is a matter of great pride because since I have took over as the director of the National Bureau of Plant Genetic Resources, this would be probably the first visit of yours in this premises of the institute. Of course, a very short one. We'll be planning a bigger occasion to invite you and have a very fruitful discussions. But nonetheless, I am very thankful to you. Thank you very much. Thank you, sir. With the permission of chair, we would like to play short video clips for a virtual presentation of certificates to participants. Thank you, Ankur. You really commendable efforts for making all this. Now, may I request our chief guest, Dr. T.R. Sharma sir, for a formal release of the publication of training manuals. Thank you, sir. As we know, for making any program successful, there is a need of dedicated and sincere team efforts. So I request our chief guest to kindly award appreciation certificates to the training organizers. So I will take name one by one. So I request. First, I'd like to request Ankur Tomar. Please. Ankur Tomar. Shivangi Mathur. Chief Vijay Kumar Mandal. He has managed everything through online mode and through platform even on holidays also. Arun Kumar Sharma. He is involved in all logistic arrangement process. Dr. Ravi Pamarthi. He is training co-convener. Dr. Kuldeep Tripathi.
Dr. Jyoti Kumari, Training Coordinator. Dr. K.S. Suda, HOD Nodal Officer, HRD Nodal Officer, ICR in India, Training Coordinator. Dr. R.K. Gautam, sir, Head Division of Jump Plan Evaluation, or also overall guidance for this training program and the training program. Thank you, sir. Thank you very much. Finally, the time has come to listen our chief guest of today's function, Dr. T.R. Sharma, sir. I request for your kind words. Very good morning to all. The distinguished director of the institute, Dr. D.P. Singh, Dr. R.K. Gautam, Head Division of Jump Class Evaluation, Dr. Jyoti Kumari, Coordinator, Dr. K.S. Suda, Nodal Officer, HRD, Dr. Ashok Kumar, former Director and BPCR, different heads of the divisions, participants, trainees, ladies and gentlemen. First of all, I would like to extend my heartiest congratulations to all the trainees who have successfully participated in this particular training program and also completed 21 days training program on management and utilization of plant genetic resources. It's very difficult to organize such training program for 21 days continuously and devote time on extending knowledge of different topics to the stakeholders, that is trainees. So my congratulations to all the organizers as well as to the director of the institute for getting this training program on competitive mode from education division and then organizing for 21 days. But next time onwards, my suggestion would be that it should be on offline mode. Practical trainings can be given to the participants very extensively. Although I could see that you organized practical classes online also, but we all know that whenever we organize such training programs, the most important thing is practical hands-on trainings. And I'm sure that in future you will try to organize this program offline and make it more meaningful. But there are advantages of organizing training programs online. You could get 84 participants, which probably would have been difficult to arrange for such a number of training programs, such a number of trainees at this particular campus because of various limitations of stay, faculty, as well as lecture theatre, etc. So, although advantages and disadvantages are there, but most important thing is that you could successfully achieve your target of imparting 21 days training. My heartiest congratulations to all of you. Well, friends, National Bureau of Plant Genetic Resources is the custodian of germplasm resources of the country. And it's one of the unique institutes which we have in crop science divisions. You know, we have 38 institutes in crop science division with more than 2,000 scientists working across the country in various more than 85 crops. But you deal with all the germplasm of all crops. And that is very, very important. And its process starts from collection of germplasm from different parts of the country. For the past many years, you have made efforts to collect germplasm and then their characterization for different traits, using different technologies, and then making them meaningful in terms of conservation and utilization in breeding program.
till recently, these exercises have been done only in the laboratory. But for the past few years now, whole NBPCR is going to the field, and every year you are characterizing all germplasm of different crops from the field conditions and making them available to the breeding community of this particular nation. So we know that the significance of germplasm resources in terms of collecting genetic variability from different parts of the countries for different traits and then utilizing them in plant breeding. Besides now the genetic resources, now we have genomic resources, which this institute is one of the leading institutes which characterize all these germplasm using molecular biology techniques, particularly using high throughput DNA sequencing, resequencing of germplasm, transcriptomics, etc. And then making and developing DNA markers for different traits which can be utilized by the breeders across the country. And we deal with genetic resources as well as genomic resources. Large amount of data is being generated, so bioinformatics is very important tools. And now big data analytics and machine learning approaches, which probably you organize some topics, AI, etc. That's very important. We have to move with the advancement in science. We should try to see that this big data which we are generating in terms of genetic and genomic resources should be utilized by using computational biology approaches and can be made meaningful. You know that germplasm are very important for allele mining and bioprospecting. And we had a very huge program in the Indian Council of Agriculture Research on allele mining of different germplasm resources for traits, alleles of different traits. And also now the institute is also making efforts to collect wild species, which are very important source of different orthologs of different genes. And orthologs are very important in the various crops where genetic variation present within the open reading frame or within the gene is becoming very important allele for their utilization in crop improvement program. So allele mining is very important, and the generation of SNP databases, SNP genotyping, as well as utilizing of these SNP markers for developing core and mini core is the one of the important exercise of this institute, and various scientists of this particular institute and also scientists across the countries are participating in allele mining efforts of different genes in different resources. These types of genetic resources are becoming very important now, and particularly wild species are very important to initiate the project on pre-breeding. And institute is, I have seen your experiment under field conditions on your Isapur farm as well as the IRA farm. A lot of efforts are going on characterizing new germplasm as well as doing breeding or mapping of traits of significance with different DNA markers and then utilizing those traits in their marker assisted breeding. So we have seen your efforts, and I'm sure that the areas of pre-breeding should be strengthened at this particular institute, and then pre-bred material should be distributed to the crop-based institutes for further evaluation, characterization, and utilization in their breeding program. So that area is still at infancy, and my request to the director is that, particularly in those crop species where variability is very less, let us try to exploit variability from wild resources and try to make these wild resources useful in their pre-breeding programs and develop populations, mapping population, breeding populations,
and then share those populations with the breeders across the country, so that these type of genetic resources should become very important tool in present global climate change. And we have a lot of problems of terminal heat tolerance in case of in case of wheat, and now we are feeling its effect nowadays when temperature is rising. Everyone is worried about what would be the fate of wheat crop in the field. Similarly, drought is very important in most of the crop species, and work on water use efficiency. Increase water use efficiency of the crops so that they can become important in terms of growing them in the drought conditions of water-limited conditions. Similarly, nitrogen or nutrient use efficiency is very important trait. We should try to identify germplasms which are more efficient in uptake of nutrient, its assimilation in the body of the plant, and then partitioning of nutrients in the grain, so that we can have grain dense with protein, micronutrients, and all the important anthocyanin contents which are very important for our health. So now Institute has to change its objective, maybe from the routine work, we have to look for all these traits which are the traits of future breeding, particularly water use efficiency and nutrient use efficiencies, and also biofortification of crops. So very, very important breeding objectives in future, which would be playing very important role in future. I'm sure that the Institute will definitely change its course of action and moving from its routine work of conservation, collection, conservation, and characterization of germplasm to the high-end approaches, which all the techniques are available at the Institute itself as well as the nearby institute at IRI in New Delhi. So we need to collaborate with various institutes. It's an era of collaboration, and NBPGR is an institute which cannot work without collaboration. And we have seen in the past also, the institute has done a lot of very good work in terms of characterization of full germplasm of wheat, and now I'm told is that millet germplasm is in the field. So such efforts are very, very important. We should try to make small video films on all those efforts and try to show these participants and also to the visitor of this institute, those who are coming to this institute. We should try to show all those video films and how we are making use of our efforts in characterization of germplasm under field conditions, and then making them usable from the point of view of breeders. Friends, such training programs are very, very important for human resource development in the country, and being an institute of different objective and different mandate, you have taken advantage of this program, which is available through competitive mode from Education Division of Indian Council of Agriculture Research. And I'm sure that in future also, you would also like to organize special training program on high throughput phenotyping. Maybe 7 days training program on high throughput phenotyping, 7 days training program on data management and its utilization, and maybe only 7 days training on hands-on training on how to conserve genetic resources in its pure form, the gene bank. That's very, very important. Instead, we try to give 1 lecture or 2 lectures of particular topic. Let us have a capsule training on a specific objective and a specific program, so that you can expand your things in different directions. And I'm sure that with the new things which are happening in the council now, you will be more involved in teaching program of IRI besides your ongoing busy program, and try to organize such training programs, short training program or diploma courses in various activities of NBPGR, so that you should become more relevant in future.
My best wishes to all of you, and I am thankful to you for giving me opportunity to be here this morning. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your suggestion, guidance, and motivational words. Certainly, we will try to be at your expectation. As a mark of respect and affection, may I request our Honorable Director, Dr. G.P. Singh, sir, to felicitate our chief guest. Thank you, sir. Now I request Dr. K.S. Suda, training coordinator and HRD Nodal Officer of ICR and BPGR for formal vote of thanks. I'm Sushil, sir. I'm visualized. First of all, I thank Honorable Dr. T.R. Sharma, Honorable DDG Crop Science to be here with us and elaboration on different PGR activities and even advising us that from conventional techniques to molecular techniques and what changes are required in further PGR research. So thank you very much. You spare time from your busy schedule. I'm also thankful to all head of the divisions, Dr. Shokkumar, Dr. Veena Gupta, and all team organizers who for 21 days they have done wonderful job and they are with us, and that's why we could do it. Our honorable director was always ready with us. In all respect, he has helped us, and that's why we could successfully conclude this training of 21 days. Thank you very much. Now we will have group photo in front of the NVPGR. आइए फोटो हो जाए आइए यहाँ से क्या जाना इसके साथ ना बैनर के साथ मीटिंग तो एक बार अनाउंस भी तो कर देना कि इसको सबकी कर दिया तो हो गया ना वो तो
So training end.